throughout our lives, throughout the day, we undergo a lot of contracts. Right from the morning. सुबह दूध वाला आता है ना, दूध देने के लिए, न्यूज़पेपर वाला आता है न्यूज़पेपर देने के लिए, आप कहीं ऑफिस जाते हो तो बस में जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं ना, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है. Knowingly, unknowingly, we are undergoing contracts. Similarly, throughout our lives also, we undergo a lot of transactions. बहुत सारे transactions हम करते हैं और वो transactions हम and some are documented also. कुछ transactions documented भी होते हैं. जो ये documents है और जो ये transactions है, एक हो गया receipt. जब आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिसीट मिलता है ना, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो या कुछ खरीदते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको रिसीट मिलता है, राइट. बट व्हाट हैपेंस इज दैट सम ऑफ दीज जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हो, कैसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने कुछ बनाया, कैसे डॉक्यूमेंट, यू टेकन एडमिशन, लाइक यू टुक एडमिशन हियर, यू गेव सम चेक्स, आपने किसी से कोई पैसा लिया, जैसे आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेकिंग लोन, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, ठीक है, उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उस चीज को, डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को आपने लिख लिया और उससे आपकी कोई जो है ना, कोई किसी तरीके की लाइबिलिटी अराइज हो गई या फिर लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो गई. Term document has been defined under Section 3 of your Indian Evidence Act and has been defined under various other places also, like Indian Penal Code also, है ना. तो हम लोग throughout lives बहुत सारे documents and transactions करते हैं ना, करते हैं. But क्या होता है, अगर हमारे पास एक proper mechanism नहीं है इन documents को regulate करने का, सरकार को भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन कितने transactions कर रहा है, उसको regulate करने का किसको देखना है, state has to see ना, state has to know how many documents Parul is undergoing, how many transactions Aniket has undergone. उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए और उसको कोई चेक करने वाला होना चाहिए, और उसको चेक करने वाला कौन है, स्टेट. और इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं. तो उन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाया, रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपका 100 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन है ना, तो आपने उसको रजिस्टर करना है. अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ें, बेसिक जो मैं आपको बता रही हूँ, कि अगर 100 रुपीज का आपका ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन है, आपने उसको क्या करना है, उसको आपने रजिस्टर करना है, right? We have come across this, under various provisions under Indian Registration Act. So now, in order to have some mechanism to regulate these documents, to regulate these transactions, we basically started doing what? Registration of these documents. अब जब registration हम लोग करने लगे, अब यहाँ से क्या हुआ कि अब सरकार को लगा हमें कुछ revenue भी तो चाहिए. अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसकी मालिक हूं, बट अल्टीमेट अगर आप देखें ना बेटा, अल्टीमेट मालिक जो है गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है ना. और अगर उस प्रॉपर्टी को मैं एक्चुअली सेल कर रही हूं, इफ आई एम सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, लेट्स से टू पारुल, इन दैट केस द बायर विल ऑल्सो हैव टू डू व्हाट. अब हमारे बीच में सेल डीड बनेगी ना, राइट. और सेल कहां पे हमने पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा. अब वो जब सेल डीड बनेगी तो उसको हम रजिस्टर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ ट्रांजैक्शन. अब रजिस्टर करने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार को उसके ऊपर कुछ रेवेन्यू भी देना पड़ेगा. अब वो रेवेन्यू कैसे देंगे हम, उसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम स्टैंप ड्यूटी. अब ये स्टैंप ड्यूटी की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, ये पैसा नहीं एक्सचेंज करते हम, फॉर दिस मैकेनिज्म, विच मैकेनिज्म. Now, once the mechanism of regulating these documents, regulating these transactions, like sale, like, your power of attorney, ये सब जब sort out हो गया ना under registration, अब इनमें से हमने क्या कहा कि हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए, हमें कुछ रेवेन्यू चाहिए. और इन रेवेन्यू के लिए हमने क्या किया, इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने हमने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, हमने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिशर्स ने लॉ इंट्रोड्यूस किया 1899 में, जिसमें हमने क्या करा, हम स्टैंप ड्यूटी इंपोज करने लगे. वी स्टार्टेड इंपोजिंग स्टैंप ड्यूटी. नाउ इफ वी गो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द बेसिक, क्या है इसका. अब हमने जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, मैंने 80 लाख की प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर 25,000 पे स्टैंप ड्यूटी दिया. मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, मैंने 10,000 रुपए उसके ऊपर स्टैंप. अब ये स्टैंप होता क्या है, हम इसको, आई विल शो यू सम इमेजेस, एडहेसिव स्टैम्प्स आपने पढ़ा होगा,
है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैम्प। तो ये आपका चैप्टर 2 है स्टैम्प ड्यूटी, जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैम्प, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, ई स्टैम्प चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प, ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। बट नाउ वी विल गो टू फर्स्ट द हिस्ट्री ऑफ स्टैम्प एक्ट, हिस्ट्री। ऑलराइट, लेट्स सी। अभी अगर आप अपना बेयर एक्ट देखें, अपने बेयर एक्ट के ऊपर हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, जो आपका इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो 1899 का है। ऑलराइट, उस टाइम पे इंडिया आजाद था। डिड वी वर वी इंडिपेंडेंट? नो वी वांट, है ना, इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सबसे पहला एक्ट, सो बेसिकली आई टोल्ड यू कि जो ये इंडियन स्टैम्प एक्ट है ये किस चीज के लिए ब्रिटिशर्स ने बनाया था? टू रेज द रेवेन्यू, दैट वाज द पर्पस। ओके, वी विल आई विल कम टू ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ दिस एक्ट आल्सो। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम इसको कहते हैं, ये ना एक फिस्कल स्टैट्यूट है। हम इसको क्या वर्ड यूज करते हैं? वी यूज द टर्म, इट्स अ फिस्कल statute. Fiscal statute. What do you mean by fiscal? FISCAL. Fiscal statute. Matters related to, see, can I say public finances? Public finances, ठीक है ना? So it is basically, और स्पेशली अगर हम देखें सरकार का रेवेन्यू एंड सरकार का एक्सपेंडिचर। सरकार, देखो फिस्कल स्टैट्यूट ना, मैंने क्या कहा, फिस्कल का मतलब क्या हुआ? पब्लिक फाइनेंसेस, ठीक है। में हम बात करते हैं सरकार का रेवेन्यू और सरकार का एक्सपेंडिचर। सरकार कमाती कैसे है? हाउ डज सरकार, हम बोलते हैं ना सरकार कभी भी अपना पैसा नहीं छोड़ती, बट सरकार टैक्स कैसे, सी हाउ डज गवर्नमेंट अर्न? हैव यू थॉट अबाउट इट? हाउ डज गवर्नमेंट अर्न? बाय इम्पोजिंग टैक्स। ईयर एंड में आपको अपना दिखाना पड़ता है कि हाँ जी आपने, आपका कितना इनकम है, उसके ऊपर सरकार टैक्स इम्पोज करती है। एक तो हो गया टैक्स, और कैसे सरकार अर्न करती है बेटा? जीएसटी, है ना, जीएसटी इम्पोज, मतलब आप कुछ भी कमोडिटी देते हो उस पर आप अपना टैक्स देते हो ना। और कैसे, राइट, ठीक है ना। और कैसे सरकार जो है अर्न करती है? जो आपके ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट्स उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करके, राइट। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिन तरीकों से सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिस तरीके से सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करते थे। रजिस्टर करने के बाद फिर क्या सोचा ब्रिटिशर्स ने कि क्या करते हैं हम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया कि हम लोग ना एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका जो है, मैकेनिज्म सॉर्ट आउट करते हैं। और सबसे पहला उन्होंने जो एक्ट बनाया, दैट वाज स्टैम्प एक्ट 1869. When was the first maiden effort made to raise the revenue by the British government? That can be a question for pre. When was the first maiden effort made to raise the revenue by the British government? That was in the year 1869. और इसका नाम क्या था? स्टैम्प एक्ट 1869। यहाँ इंडियन वर्ड नहीं है, इट इज मिसिंग। इट स्टैम्प एक्ट 1869। Now this act was replaced. इसको रिप्लेस किया किसने? It was replaced by your Indian Stamp Act 1879. अब जब ये इंडियन स्टैम्प एक्ट 1879 का आया, कैन यू सी 1879 1879, okay, all right. Now and the term is Indian Stamp Act 1879. अब when this was enacted, Indian Stamp Act, तो यहाँ पे ना they proposed around 10 different types of enactments to be amended. So then a need was felt कि rather than having so many amendments, let's have a comprehensive law. और उसके बाद उन्होंने एक इंडियन स्टैम्प बिल इंट्रोड्यूस किया। और इंडियन स्टैम्प बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद दैट वाज पास, एंड फाइनली जो अभी हम प्रेजेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, दैट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 1899। तो 1899 को
27th of January. 27th of January. That is the enactment date. Enactment date is when the president gives the assent, but उस time पे president नहीं था, तो किसने assent दिया होगा? Governor General ने. All right. So 27th of January 1899 इस दिन क्या था? Enact हुआ. कौन सा Act? Indian Stamp Act 1899. Indian Stamp Act ISA 1899. I'm using an abbreviation, okay? But आप लोग abbreviation मत use करना. Indian Stamp Act 1899. And when was it enforced? It was enforced on 1st of July 1899. 1st of July 1899. That was the. So now these are your questions for your preliminary examination. 1st of July 1899, 27th of Jan 1899 enactment date, enforcement date, and also the first maiden effort was made in the year 1869 by the British government. इसके बाद हमारे पास मेजर जो अमेंडमेंट्स आए हैं ना बेटा आपके स्टैम्प एक्ट के अंदर, वो मेजर अमेंडमेंट्स हमारे पास कब आए हैं? प्लीज हैव अ लुक. एक तो हमारे पास जो है 2019, जब आप पढ़ेंगे ना तो आप फुटनोट्स में देखेंगे that there are major amendments by the 2019 and also अभी 2021 में क्या हुआ है? फाइनेंस एक्ट 2021. Finance Act 2021 has made some amendments to the Indian Stamp Act 1899. Finance Act 2021 has made some amendments to the Indian Stamp Act 1899. Finance Act कब का enactment date कब है? Finance Act की amendment date, enactment date जो है that is 28th of March 2021. And इसकी enforcement date है 1st April 2021. फाइनेंस एक्ट 2021 ने क्या किया है? हमारे इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर they have inserted section 8G. This also can be a question for your preliminary examination. अभी सीपीसी में अगर आपने अभी लेटेस्ट 2023 का पेपर देखा है, सीपीसी में क्वेश्चन आया था ना, दे हैड इंटरलिंक्ड सीपीसी विद कमर्शियल, कौन सा कमर्शियल कोड्स एक्ट ना, कमर्शियल कोड्स एक्ट. ठीक है. सो सिमिलरली यू शुड नो कि कब कहाँ पे कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कैसे फिर वो अमेंडमेंट जो है अगर किसी स्टैट्यूट को अफेक्ट कर रहा है. सो फाइनेंस एक्ट 2021 28th of March 2021 and 1st of April. That's the enforcement date, that's the enactment date. And this Finance Act कभी कभी अगर आप देखें तो ये भी कभी पूछ सकते हैं. It is 13 of 2021. 13 नंबर को आपने याद रखना है. और अगर आप इंडियन स्टैम्प एक्ट देखें, कैन यू सी ऑन द हेडिंग वहां क्या लिखा है? ऑन इन योर बेयर एक्ट, एंड यू शुड आल्सो राइट इट इन योर नोट्स इफ यू आर मेकिंग. दिस एक्ट इज 2 of 1899. और अगर आपके एग्जाम की इसकी वेटेज देखो तो आपको पता है ना प्री में कितने मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं इसमें? 7 to 8 questions in preliminary examination. So right on top, you can just put it that for pre, you are asked around 7 to 8 questions. And for mains? To 25 marks. So it has a good weightage. And it's a very simple act. Let me tell you, it's mostly bare act based. आपको इसमें कोई separate notebook बनाने की भी जरूरत नहीं है. But yes, you may have a small, handy, या तो आप sheets, on sheets or a small diary for Indian Stamp Act. Otherwise, bare act should be done thoroughly. Okay, you can't compromise with the bare act. So did you understand the history? Now, अब थोड़ा सा हम जाएंगे किसके साथ? We will, as I told you that it is an Indian Stamp Act जो है ये आपका कब का है? 1899 का है. And ये इसका हिस्ट्री है. We have understood the history. And we have understood कि yes 2021 see 2019 में भी ना आपके बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे. 20 प्लीज ये भी इंपॉर्टेंट है. 2019 प्लीज डू नॉट फॉरगेट 2019 में इंडियन स्टैम्प एक्ट में बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं.
by virtue of 2019. Let's see the Indian Constitution. Basically, see, आपका जो ये Stamp Act है, it is laying down laws relating to tax, right? The tax that we are levying on the, tax, but in the form of stamps, not monetary, but we are talking about Stamp Act is talking about tax in the form of stamps. Stamps किसके ऊपर? On documents, on certain instruments. But वो कौन से instruments है? I repeat, please listen to this very carefully. What I'm trying to say is कि जो आपका Stamp Act है, वो क्या कर रहा है? Stamp Act. What is Stamp Act doing? It is lays down law relating to tax in the form of stamps. In the form of stamps on the instruments. All instruments are documents, but all documents are not instruments. Are you understanding? All the documents are not instrument, but all the instruments are document. Document is a genus, instrument is a species. Instruments क्या होते हैं? You can say, it is a document, but it imposes certain kind of liabilities. ठीक है ना? या फिर वो कुछ liability impose करता है या किसी right को extinguish करता है, but वो document भी होते हैं. But सारे documents instruments नहीं होते हैं. और सारे instruments जो है वो document होते हैं. So what I stated is that Stamp Act क्या कर रहा है? It is laying down law relating to tax, but that tax in the form of stamps on the instrument. But ये कौन सी instruments है? अब यहाँ पे हमें Indian Constitution को refer करना है. ये कौन सी instruments है? ये वो instruments है जो आपके on the instruments which are specified in entry 91, list 1, 7th schedule. 7th schedule. Please open if you have your Indian Constitution, because these are nuggets. You are understanding? Stamp Act में जितना कुछ दिया वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखेंगे आपको सारा डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं. ठीक है, यू जस्ट हैव टू ओपन द बेयर एक्ट. अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगी ना, आपको बस समझ में आ जाएगा कि मैम हमने ये खुद बेयर एक्ट पढ़ना है और यहाँ चीजें हमने अगर पढ़ लेंगे तो हमारा कंप्लीट. बट दीज आर द नगेट्स. दिस इज एन एड ऑन. ठीक है ना? सो इफ यू हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज काइंडली ओपन entry 91. Go to the 7th schedule. Please go in the end. Go to the 7th schedule. And this is list 1. List 1 क्या होता है बेटा? List 1 में we have 3 lists ना. कितनी lists होती है हमारी? 3 lists है ना. Union list, state list and concurrent list. Right? So ये first list जो है ये तो अभी अगर हम पूछे तो entry 91 list 1 is union list. This is union list. ये instruments हम कौन से बात कर रहे हैं? Union list. Union list मतलब central government के पास पावर. ठीक है ना? प्लीज गो टू एंट्री 91. कैन यू सी रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अंडरलाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, अंडरलाइन चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ लैडिंग. ये सारे आपके टर्म्स डिफाइंड है यहाँ पर, हम करेंगे. ठीक है, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ लैडिंग, अंडरलाइन बिल्स ऑफ लैडिंग, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉक्सीज एंड रिसीट्स. बस इतने ही इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो टैक्स इंपोज करेगा वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कहां फॉल कर रहे हैं? दे आर ऑल फॉलिंग अंडर योर एंट्री 19 लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So you have to mark these instruments, and in instruments के ऊपर they are falling under union list. अब इसके अलावा और भी तो instruments है ना बेटा, जो this is not an exhaustive, मतलब पूरा list नहीं है of the instruments. इसके अलावा और भी instruments है जिनके ऊपर हम stamp duties impose करते हैं, stamp duties लगाते हैं. Property tax हो गया, है ना? फिर आपका power of attorney हो गया. वो instruments कहाँ आएंगे? So stamp duties on instruments other than these, वो कहां फॉल करेंगे? प्लीज गो टू योर लिस्ट 2. गो टू लिस्ट 2, एंट्री 63.
Can you see all of you? अब ये स्टेट लिस्ट शुरू हो गया बेटा, क्योंकि ये लिस्ट 2 में आ गए ना, ये लिस्ट 2 में आ गए. तो स्टेट rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provisions of list 1 with regard to rates of stamp duty will be, वही कहाँ fall करेगा? Under the state list. Apart from the documents which are mentioned under entry 91 under list 1 of the 7th schedule, बाकी सारे documents यहाँ fall करेंगे. और state, are you understanding? They will fall within the legislative power of the state government. And उसके अलावा कुछ और documents है जिसके ऊपर union and state both have the power to to impose the rates of duty on the stamp, और वो concurrent list में fall करेंगे. और आप list 3 में entry number 44 में जाइए प्लीज बेटा. Go to entry 44. Stamp duties other than duties or fees allocated by means of judicial stamps but not including rates of stamp duty will fall under entry 44. So you must remember that there are certain documents like bills of exchange, like promissory notes, they will fall under bills of lading. Or agar aap apna, please, if you have Stamp Act, if you see your Bear Act, and if you can just see the definitions, you can see bills of exchange, section 2, subsection 2. Can you see section 2, subsection 3, section 2, subsection C, letter of credit, section 2, subsection 4, bill of lading. तो ये सारे आपके union list में fall करेंगे. So these are nugget. When you're explaining them na, and you can interlink it with Indian Constitution. So that's going to be a nugget, कि ये जो bills, ये जो documents है, ये जो instruments है, ये आपके union list में fall कर रहे हैं. And apart from them, they are going to be covered under your state list or the concurrent list. Now we come to, before I go on to the Bear Act and give you one, complete overview of the entire Stamp Act, we also must know the objective. I've always been telling you कि जब भी आपको mains या कभी भी आप कोई भी answer लिख रहे हैं या कोई भी law पढ़ रहे हो या फिर कोई provision पढ़ रहे हो, you should know the purpose, ना? Purpose. Why are we studying? What is the reason? Why did they enact the Stamp Act? What is the objective? What is the policy? Right? So what is the objective of Stamp Act? What is the objective of Stamp Act? क्या है objective Stamp Act का? Yes? Anybody would like to? सबसे पहले तो to generate the revenue? Yes? To generate revenue for the Indian government. To generate revenue for the Indian government. To generate revenue. All right. Second, what is the objective? The second is, see beta, agar koi document which needs to be registered and stamped and it is not stamped, in that case, it is not admissible in evidence. In that case, it is not admissible in evidence. So a document which is stamped acts as a valid evidence. A document which is stamped acts as a valid evidence in the court of law. Then the third, did you understand? So a document which is, अभी जब हम provisions भी पढ़ेंगे ना Stamp Act के, we will realize that let's say I sold a property to Parul and Parul also purchased that property और हम दोनों ने sale deed बनाई. But sale deed के ऊपर हमने ना उसको क्या नहीं किया, stamp नहीं किया. Right? और properties exchange कर ली, possession मैंने ले लिया. Sale deed पारुल ने, sale deed मेरे नाम पे मतलब execute कर दी पारुल ने, but we haven't paid any kind of stamp. Now what are the liabilities? There's a full-fledged chapter. There's a full-fledged chapter that we will be covering here under your Indian Stamp Act. Okay? And also, there is even if I want to prove that I am the owner, or the purchaser wants to prove that he is the owner of that property, he will not be able to prove it. Why? Because ये जो document है, जो वो sale deed है ना,
it is not a valid evidence, the court of law, because it is not properly stamped. Not a valid evidence matlab a document which is stamped acts as a valid evidence, but if it is not stamped, it will not act as a valid evidence, meaning thereby it is not admissible. Okay? All right. And the third objective is also somehow related only, but yes, Stamp Act also makes the payment of stamp duty, the payment of stamp duty on some documents mandatory. Mandatory का मतलब compulsory, and in return these documents are legally admissible and valid. Somehow related to the second point only, but there are some documents which are required and compulsorily required by the Indian Stamp Act to be documented, and the payment on those have to be mandatory. जैसे आपका प्लेंट है बेटा, प्लेंट एडमिट करने से पहले भी हम स्टैम्प ड्यूटी देते हैं ना बेटा, क्योंकि वो भी एक ट्रांजैक्शन है, यू नो, और उसको रेगुलेट भी कौन कर रहा है, that transaction or any document that two parties are undergoing that needs to be stamped so that the government can generate certain kind of revenue and can also understand कि yes उसको mechanism चाहिए ना regulate करने के लिए कि कितने litigations चल रही हैं, you know, how many litigations are there. All right, so we need to have a proper record for the same. Now, if any document which is required by law to be documented and payment of stamp duty is also mandatory, in return that document will be legally admissible and valid. So somehow related to the second point only. So majorly we have 2 points. That first is it generates the income for the government, and secondly that these documents are legally valid and admissible if they are properly stamped. Did you understand? So these are the 2 major objectives of your Stamp Act, Indian Stamp Act. और जब आप ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हो जहां पे ये ना एडमिसिबल, इसको आप सेक्शन 91 के साथ भी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 91 भी इंटरलिंक कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सेक्शन 91 क्या दे रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का? बेस्ट एविडेंस रूल. और बेस्ट एविडेंस रूल में क्या है? डॉक्यूमेंट. If something has been documented, should be proved by the document itself, right? So you can also interlink it with section 91 of your Indian Evidence Act. Here. Is everybody clear on these points? All right. Now we come to the अब हम देखेंगे कि yes हम इंडियन स्टैम्प एक्ट को पढ़ेंगे कैसे और किस तरीके से जो है ये इंडियन स्टैम्प एक्ट में कितने टोटल चैप्टर्स हैं, कितने टोटल सेक्शंस हैं, और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एग्जामिनेशन के लिए कौन सा एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा? ऑलराइट. सो इंडियन स्टैम्प एक्ट में जो टोटल है वी हैव 8 चैप्टर्स. हाउ मेनी चैप्टर्स? 8 चैप्टर्स. Then we have total 79 sections. Total 79 sections. And we have 2 schedules. We have 2 schedules. Am I clear? We have 2 schedules, 79 chapters, 79 sections and 8 chapters. 8 chapters. All right. So आप इस पे फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं. I have less of space, so I'm just putting it point wise. Or you can draw a sleeping line and then do the flow chart. Make a very neat flow chart. And what you can do is flow chart ko you must keep it handy. And these flow charts will really help you for your preliminary examination. मेंस के लिए तो आपको जो है you need to just go to little bit of like intricacies देखना पड़ेगा, डिटेल देखना पड़ेगा.
but at least for pre it can help. All right, for a quick revision, and even for mains, for a quick revision, it will definitely help. All right, so you know how to make a flow chart, sleeping line, and then just put the points right properly. तो हम वो सारे chapters जो है इसमें cover करेंगे. तो सबसे पहला first chapter is the preliminary. Preliminary. यहाँ पे आप लिख सकते हैं chapter 1. This is your chapter number 1. Okay, chapter number 1 is preliminary, right? और जो ये preliminary है, very important for pre and also for mains both. So इसमें आपके जो है section 1 and 2 we have, you know, but 2 के बहुत सारे subsections हैं. So this is basically all your definitions. Star for pre and mains both. All right, star for pre and mains both. Then we have chapter 2. अगर ये stamp duty, like this is the backbone. जो ये chapter 2 है ना, this is the backbone. Stamp duties. और ये कहाँ है? Section 3 to section 30. Very 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 important. एक दो जितने भी स्टार्स लगा सकते हो लगा लो. स्टैम्प ड्यूटीज, इसमें हम अलग अलग स्टैम्प्स, और यू नो वी विल सी द होल प्रोसेस. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. देन वी हैव chapter 3, adjudication as to stamps. Adjudication as to stamps. और यहाँ पे है आपके सेक्शन 31 एंड 32. सिर्फ 2 सेक्शंस का है ये आपका चैप्टर. ऑल राइट, एडजुडिकेशन यू अंडरस्टैंड. कौन एडजुडिकेट करेगा स्टैम्प्स को? कलेक्टर करेगा. ये 31 एंड 32 छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 3, जिसमें राइट जिसमें वी विल टॉक अबाउट हु विल एडजुडिकेट एज टू स्टैम्प्स. सो बेसिकली इट इज द कलेक्टर. ठीक है, he will adjudicate the amount of proper stamps. Then we have chapter 4. Chapter 4 is your instruments not duly stamped. Instruments not duly stamped. And ये है आपका section 33 to section 48. Section 33 to section 48 Indian Stamp Act. And then you have chapter 5, which is allowances for stamps in certain cases. In certain cases. And ये है इसमें आपके section 49 to section 55. All right. Then you have chapter 6. Chapter 6 के आगे star. Very important. Chapter 6, very important. Reference and revision. Reference and revision. And this is section 56 to 61. And then comes the most important, very, very important for examination, chapter 7. Important. जहाँ पे मैं IMP लिख रही हूँ, वहाँ पे आप स्टार लगा सकते हो. This is chapter 7, which is, you know, talking about criminal offences and procedure. जिसको CRPC बहुत अच्छे से आता है, you know, we say that, you know, it is one part of CRPC, जो यहाँ पे रह गया है. Otherwise, इस chapter 7 को CRPC में भी place मिल सकती थी. Are you understanding? क्योंकि इसमें सारी liabilities ही हैं. This is one part of CRPC only. Criminal offences and procedure. Criminal offences and procedure. This is chapter 7 and it is covered under section 62 to section 72. And last is, जैसे हम कहते हैं, miscellaneous, chapter 8. Miscellaneous की जगह यहाँ word use किया है supplemental provisions. Supplemental provisions.
और वो कौन से सप्लीमेंटल प्रोविजंस हैं? ये है आपके सेक्शन 73 to 79. सो इफ यू आस्क मी ना मैम, हमें क्विक एक रेसिपी बता दो स्टैम्प पैक्ट पढ़ने की जल्दी से पेपर के लिए, तो चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 1 and 2 बस, ठीक है? But you know now there are no shortcuts to success. So this is one broader view of your entire 79 sections and 8 chapters of your Indian Stamp Act. Did you all understand what we will be covering and how we will be covering? So these are the 8 chapters that we will be covering. And now, if you look into your Bear Act and we just look into section 1, सेक्शन 2 से मैं कल शुरू करवाऊंगी बेटा. आई होप यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया कि हम स्टैम्प क्यों पढ़ रहे हैं और क्या है, ठीक है? जस्ट लुक इनटू योर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. ऑलराइट. It extends to the whole of India, provided that it shall not apply to the territories which immediately before 1st of November 1956 were comprised in Part B states, excluding the state of J&K, except to the extent to which the provisions of this act relates to rates of stamp duty in respect of the documents specified in entry 91 of list 1 in the 7th schedule to the constitution. It shall come into force on first day. So you can underline entry 91. इसमें आप साथ साथ में जो मैंने और भी लिखवाया है ना, आपका लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 वो ऐड कर सकते हो. स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. लिस्ट 2 में 63 एंट्री है बेटा आपकी, 44 इन लिस्ट 3, राइट? और फिर it shall come into force first day of July 1899. That's the enforcement date. Can you just write on top 27th of January 18? That is the enactment date. Keep marking your Bear Act. Keep marking your Bear Act. Can you also see the footnote beta? Second footnote. आपका सेकेंड फुटनोट आप देखें प्लीज. वहां पे क्या लिखा है? द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ओमिटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. आपका सब सेक्शन 2 है ना, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 होल ऑफ इंडिया. नाउ वहां पे पहले क्या था? एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अभी जो है इट हैज बीन ओमिटेड बाय द 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. All right, and then the proviso says that it shall not apply to the territories which immediately before 1st of November 1956 were comprised in Part B states. Part B states पे apply नहीं करेगा, excluding the state of Jammu and Kashmir. Now it is, है ना? Except to the extent to which the provisions of this act relates to the rates of stamp duty in respect of the documents specified. So जो आपके documents entry 91 में specified है ना, entry 91 में जो अभी हमने पढ़े, bills of exchange, bills of lading, promissory notes, उनके ऊपर अप्लाई करेगा आपका इंडियन स्टैम्प एक्ट, बिकॉज उसमें किसका पावर है? यूनियन गवर्नमेंट का ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, ठीक है? सो only this much is important for your preliminary examination from section 1. I hope everybody is clear. So today, just get acquainted with your Bear Act of Indian Stamp Act. Just go through. Just sit for 15 minutes और अपने ना just flip pages and just have a look. Just see how many sections are there. Just see how many chapters are there. Just look into the schedule. Just see what the schedule is saying. कितने columns है schedule में बेटा, ठीक है? जस्ट सी द हिस्ट्री, जस्ट सी द इनैक्टमेंट, एनफोर्समेंट डेट, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट को साथ में खोलकर रख लो बेटा, ठीक है? अपना सीपीसी में देखो जहां पे लिखा है इट इज मैंडेटरी टू पे द स्टैम्प ड्यूटी. जस्ट एनालाइज, जस्ट सिट एंड जस्ट थिंक अबाउट कि क्यों ये स्टैम्प एक्ट बना होगा. एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट डूइंग द, वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, कल मैं आपको कुछ स्क्रीन पर आई विल शो यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स, किस किस तरीके के स्टैम्प्स. अगर आपके पास घर पे कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आप देखो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज हुई होगी तो किस तरीके के स्टैम्प्स लगे हुए हैं उसके ऊपर. जस्ट हैव अ लुक, क्या क्या एम्बलम्स है उसके ऊपर, यू नो, जस्ट हैव अ फील ऑफ द स्टैम्प. तो वो कल हम जो है उन स्टैम्प्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, ठीक है? सो फॉर नाउ आई हैव गिवन यू अ फेयर बैकग्राउंड ऑफ द Indian Stamp Act and tomorrow we will start with the definitions.